Hello friends, so today we are going to do the quadratic equation, how to solve by using the quadratic formula. Already in our previous video we have learned how to solve the quadratic equation by factorization method. So today we are going to learn the quadratic formula, which is very important not only for class 10th, for so many different competitive exams. Wherever the quadratic equation is given to you, or in the practical problems also, very easily and quickly we can find out the roots of that quadratic equation using the quadratic formula. So what is that? So already the discriminant, you have done it. In my previous video we have discussed that. So d is equals to b square minus 4ac. So this is the formula for discriminant, और in हिंदी जिसको हम विभेदक भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश रहती है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ, तो मैं हिंदी में भी बीच बीच में बोलता रहता हूँ इसीलिए. तो विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट हमें ये पहले से ही बता देगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं, और अगर है तो कैसा सॉल्यूशन है. तो उसके तीन डिफरेंट रूल्स हैं जो हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किए थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो हमको रियल एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू if it is equals to 0 then we will get what type of roots? Real and equal roots. और अगर वही विभेदक की वैल्यू हमें 0 से छोटी मिलेगी, मतलब नेगेटिव मिलेगी, तो हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं मिलेंगे. So we cannot solve that quadratic equation. So there is no real root. So no need to waste the time. So today quickly we will learn this the quadratic formula, and using that how to factorize, how to find the roots of the, without doing the factorization, how to find out the roots of that quadratic equation. So already the question I have written, find the roots by using quadratic formula. So because we use this discriminant in the formula also, so it's better that first we will find out the discriminant of the given quadratic equation. So first of all you can write the values of a, b and c because that only is there in the formula. तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 9, b की वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट है दैट इज +7, और c जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 2 हियर -2 बिकॉज नेगेटिव है. तो साइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों पॉजिटिव थे तो 9 और 7 पॉजिटिव है और 2 इज नेगेटिव, सो c इज -2. अब हम जल्दी से इसकी वैल्यूज पुट करके डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं. तो b इज 7, सो 7 स्क्वायर -4 इंटू a इज 9 multiplied with c, the value of c is -2, -2. Now 7 square we know is 49, and negative into negative first make it positive. तो कई बार इस साइन में ही मिस्टेक हो जाता है तो नेगेटिव आ जाता है और हम कह देते हैं नो रियल रूट्स, जबकि उसके रूट्स होते हैं. सो 9 4 the 36, 36 2 the 72, and when we will plus this, so this will be equals to 121. So 121 because it is bigger than 0, so you will write that because d is bigger than 0, so it has real roots. It has real roots. तो अगर वो पूछा है उन्होंने कि find out by discriminant that whether the roots are there or not, तब भी ये करना है. नहीं पूछा है तो भी ये करना है, क्योंकि यही वैल्यू d की हम डायरेक्टली पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपका, तो इसके दो रूट, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 2 है तो दो रियल रूट्स मिलेंगे. तो ग्रेटर देन 0 है वैल्यू 121 है,
तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, और लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए ये वैल्यू, देन नो रियल रूट्स, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक। तो उसके दो सॉल्यूशन, दो रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स हमको, रूट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो हियर वेरिएबल इज एक्स, को उसको हम एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। सो व्हाट इट विल बी, द फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, and the second root will be beta, we can say. So that is minus b minus under root d upon 2a. So this will be the quadratic formula we are going to use in every question. So इससे आपको सीधे ही रूट्स मिल जाएंगे बिना कोई फैक्टराइजेशन किए। तो कई बार होता है कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसे वैल्यूज आ गई कि फैक्टर्स इजीली हो ही नहीं रहे, तो वहाँ आपको यही क्वाड्रेटिक फार्मूला ही काम आएगा, और इससे जल्दी भी निकल जाते हैं, सीधे रूट्स आ जाते हैं। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल करेंगे तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ से नेगेटिव बी है तो -7 प्लस अंडर रूट 121 जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है अपॉन 2 इंटू ए इज 9, और दैट इज इक्वल्स टू -7, वी नो 121 का स्क्वायर रूट 11, सो प्लस 11 अपॉन 18, और दैट इज इक्वल्स टू, so -7 plus 11, so +4 upon 18. So we'll cancel by 2, so 2 2s are 2 9s. So therefore एक रूट मिल गया हमको अल्फा, दैट इज 2 upon 9, आसानी से मिल गया। अब सेकेंड टाइम में हम सारी वैल्यूज दोबारा नहीं रखेंगे, ये 121 है, 9 ये हमको पता है, 11 आ गया तो डायरेक्ट रख देंगे, ये 18 है तो ये भी डायरेक्ट रख देंगे आप। सो एंड बीटा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट नाउ, सो वही -7, तो वही है -7, अब माइनस रूट डी, सो रूट 121 ऑलरेडी वी हैव डन, दैट इज -11 अपॉन नीचे भी 2 इंटू 9, सो दैट इज 18। सो बीटा आपका और आसानी से आ जाएगा। सो इट विल बी -7 -11, सो -18 upon 18, so 18 ones are 18, so answer is -1. So therefore we can say beta that is equals to -1. So hence you can say the roots are x is equals to alpha पहला है तो 2/9 and x is equals to -1। तो आसानी से हमको दो रूट्स मिल गए, दैट इज 2/9 एंड -1। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत आसान है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट विभेदक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, इससे हमें ये पता लग जाएगा पहले से ही कि रियल रूट्स हैं कि नहीं, अगर हैं तो किस प्रकार के रूट्स हमें मिलेंगे, यही काम है विभेदक का। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग b² - 4ac, d हम अलग से पहले ही निकाल लेंगे, जिससे हमें ये भी पता लग जाएगा कैसे रूट्स हमको मिलने वाले हैं या मिलेंगे भी के नहीं, और फिर हम उसके रूट्स इस फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो सेम ही है ये, बस यहाँ पे एक बार प्लस रूट डी लेंगे, एक बार माइनस रूट डी, दैट इज द डिफरेंस, एंड वेरी क्विकली वी विल गेट द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So I hope that you understood it well. Now quickly one more example we will do, so then it will be more clear to you. So second equation है आपकी quadratic 6x² plus x, 6x² plus x plus -2 equals to 0, -2 equals to 0. This is the second one. सो ए here is 6, जिसके आगे कुछ नहीं है, सो हम 1 लगा देंगे। सो b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2।
तो फिर से पहले हम फटाफट डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे वैल्यूज से। तो b is 1, so 1 square minus 4 into a is 6 into c is minus 2. So 1 square is 1. Again 2 negatives, so it will be positive. So 6 4s are 24, 24 2s are 48. So that is equals to 48 plus 1, 49. Now again the discriminant is bigger than 0, so it has real roots. It has real roots. We have checked, so we can find out quickly by quadratic formula. और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है बिगर देन 0 है 49, तो रियल एंड टू डिफरेंट रूट्स वी विल गेट. Now quickly we know the formula alpha is minus b plus under root d upon 2. So we will put the values. So b is 1, so negative 1 plus root 49 upon 2 into is 6. इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्विकली. सो -1, you know that under root 49 is 7 upon 2 into 6, that is 12, or that is equals to, so -1 plus 7, so that is 6 positive upon 12. We can cut by 6, 6 1s are 6 2s are, so that is 1 by 2. So quickly we can find out that the second root, that is beta. So minus b minus under root d upon 2 है. फॉर्मूला अब दोनों के लिए अलग अलग बिल्कुल लिखेंगे. एक बार प्लस ले लेंगे इसको, रूट डी को, द डिस्क्रिमिनेंट के अंडर रूट को, और एक बार माइनस, फिर वैल्यूज हम पुट कर देंगे. अब दोबारा में आप ये सारे रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं. सो इट इज -1 -7, क्योंकि यही है वैल्यूज, अपॉन 12, or that is equals to, so -8 by 12, so we can cut it by 4, 4 2s are 4 3s are, so that is -2 by 3. So quickly we have calculated both the roots alpha and beta. So finally you can write, hence the roots are x is equals to half and x is equals to -2 by 3. So that is the use of quadratic formula. So very quickly, first discriminant we can find out, फिर discriminant, क्योंकि आप फॉर्मूले में भी आप मिलेगा आपको दो अलग अलग रूट्स निकालने के लिए, अल्फा एंड बीटा, और उनकी जस्ट वैल्यूज रखते ही आपको सीधा आसानी से दो रूट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स हमेशा आपको मिलेंगे. So I hope you understand it well. So if you like my channel, so please subscribe and like it. Thank you. Bye bye.